बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के सभी देखने वालों को जो दुनिया भर में मौजूद कहीं भी हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सबको रिजवान बुखारी का अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर मैं अकेला हूँ क्योंकि इवेंट ही ऐसा फॉर्मल है कि मुझे अकेले ही कवर करना था इसे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फोर सीज़न होटल बॉस्फोरस पे, बॉस्फोरस स्ट्रेट के किनारे। पीछे आप देख सकते हैं बॉस्फोरस ब्रिज भी है। और क्यों मौजूद हूँ? क्योंकि आज बहुत ही ख़ास दिन है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो सदियों पे मुहित हैं, उनको फ़रोग़ देने के लिए एक और कदम बढ़ाया जा रहा है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ अपने आला सतह वफ़द के साथ इस्तांबुल में मौजूद हैं, जो कल तेहरान से इस्तांबुल पहुँचे थे। और पाकिस्तान तुर्की बिज़नेस फ़ोरम, बिज़नेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद कर रहे हैं। और इसके अलावा उनके डेलीगेशन में, वफ़द में अतातारट भी हैं, इसहाक़ डार भी हैं और दीगर शुरका भी हैं। तो इस इवेंट को कवर करने के लिए हम इस जगह पे मौजूद हैं। बहुत ही अहमियत का हामिल है ये दौरा तुर्की वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो कारोबारी ताल्लुकात हैं, उनको फ़रोग़ देने के लिए भी हैं। बहुत से मुआहदों पे दस्तखत किए जाएंगे और बहुत सी डील्स होंगी। कारोबारी शख्सियात भी हैं मौजूद यहाँ पर इस तकरीब में। आपको ये हाई लेवल तकरीब दिखाते हैं जिसमें आला सतह लोग मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तुर्की की भी बहुत आला सतह के शख्सियात मौजूद हैं। तो चलिए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Honorable Vice President of the Republic of Turkey, His Excellency Cevdet Yilmaz, our honorable ministers and representatives of the business communities of Pakistan and Turkey. Today's It is requested to kindly rise up for the national anthems of Pakistan and Turkey.
express my sincere appreciation to the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Trade, the Ministry of Industry and Technology, the Foreign Economic Relations Board, and you. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency, Honorable Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, His Excellency, Vice President of the Republic of Turkey, Sayın Cevdet Yılmaz, His Excellency, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan, Mr. Ishaq Dar, Honorable Ministers, very eminent business personalities, as well as the heads of the business associations, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and Vinaydan. It is my great honor and privilege to welcome you all to this Pakistan-Turkey Business Forum in this beautiful city of Istanbul. Guide Shehbaz Sharif, this forum brings together key public institutions and leading business representatives to deepen our economic partnership and explore new avenues for trade, investment and industrial collaboration. We are very thankful to Honorable. Will present a brief video highlighting Pakistan's investment opportunities. Nesiller boyu Pakistan ve Türkiye olarak her zorlukta ve önümüze çıkan her fırsatta hep omuz omuza, hep yan yana olduk. Liderlerimizin ileri görüşlü vizyonu sayesinde ülkelerimiz arasındaki bu köklü dostluk bugün yepyeni bir seviyeye ulaşıyor. Bu da her iki tarafta da ekonomik bir dönüşümü ve ortak bir kalkınmayı tetikliyor. Pakistan, Karaçi Limanı, Kasım Limanı ve Gwadar Limanı olmak üzere 3 önemli ve gelişmiş deniz limanına sahip olup Orta Asya, Çin, Orta Doğu ve daha geniş bölgelere erişim sağlayan stratejik bir geçiş ve bağlantı noktası konumundadır. Özel Yatırım Destek Konseyi'nin desteğiyle yatırımcılarımız kolaylaştırılmış prosedürlerin, güçlü bir kurumsal desteğin ve tam anlamıyla yatırımcı dostu bir ortamın rahatlığını yaşıyor. Pakistan ve Türkiye işbirliğinde en çok umut vaat eden, en heyecan verici alanlardan biri hiç şüphesiz özel hatlarında altyapı, çok cazip vergi avantajları, tesis ve makine ithalatında Thank you for your attention. Ladies and gentlemen, now I request Advisor to the Prime Minister on Privatization, Mr. Muhammad Ali, for a presentation on special economic zones and privatization of electricity distribution companies. Assalamu alaikum. Honorable Prime Minister of Pakistan, Honorable Vice President of Turkey, Honorable Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan, respected ministers from both countries, businessmen, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. So taking advantage of today's business conference, I would like to share with you 3 aspects of investments into Pakistan. A lot of thought process has gone, and there are 3 important parts of this philosophy. First, we have identified the challenges that we have to take care of. There are 6 big million, so we need major expansion pretty quickly. Again, the revenue is $180 million almost, and the offering is around $73 million on the land side. Now I invite the Honorable Minister for Petroleum, His Excellency Ali Parvez Malik, to share a presentation on Pakistan's mining sectors. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister of Pakistan, Honorable Vice President, Republic of Turkey, Deputy Prime Minister, Pakistan, Honorable Ministers from both countries, distinguished business leaders, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. Turkish Pavilion there with all the service providers to jointly build on this potential that the mining sector and the geology of Pakistan offers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning. Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Shehbaz Sharif, Honorable Vice President, Honorable Deputy Prime Minister, Excellencies, ministers from both countries, distinguished. The shale potential, we have
drilled our first vertical well in Hyderabad to tap into this potential. This pilot drilling on a horizontal level will require. Now I invite the Honorable Minister for Information Technology and Telecom, Ms. Shahza Fatma Khwaja, for a presentation on Pakistan's IT and Telecom sector. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif, Excellency Honorable Vice President of the Republic of Turkey, Deputy Prime Minister, my fellow colleagues, Excellencies, and our... After seeing deficits over the last many years, which was constantly reducing, the exchange rate has been stable for the last 18 months, around 280 to 83 rupees to a dollar. Inflation has been tamed. We are seeing around 6 to 7% inflation, single digit. GDP, it's a very important figure which I wanted to share with you. Today we are at around $1,800 per capita. Minister of Trade, His Excellency Professor Dr. Umar Balagh, to address the conference. Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin değerli Başbakanı Sayın Shahbaz Şerif'i ve kıymetli heyetini ülkemiz bir onur duyuyoruz. Katılımlarıyla programımızı onurlandıran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a da ve tüm değerli and Foreign Minister of Pakistan, His Excellency Senator Muhammad Ishaq Dar, to address this august gathering. From Turkey and Pakistan, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good afternoon. It is indeed a great pleasure to join you today at this auspicious Pakistan-Turkey Business Conference. Tashakkur, Ibrahim, and thank you, my dear brothers and sisters, to be with us this morning in Istanbul, Pakistan-Turkey Friendship. Kıymetli başkanları, Türk ve Pakistan özel sektörünün kıymetli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına hoş gelmiş olduk. Sayın Başbakan, yatırım ortaklığımızın en güçlü yanlarından biri, biridir. Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Thank you, Excellency, for your gracious words. Ladies and gentlemen, the Prime Minister's wishes continue to guide Pakistan's engagement with its global partners, especially our brotherly Turkey. Please put your hands together to welcome the Honorable Prime Minister of Pakistan, His Excellency Mohammad Shehbaz Sharif. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency Vice President Cevdet Yılmaz, Honorable Deputy Prime Minister and the Foreign Minister of Pakistan, Mr. Ishaq Dar, ministers from Turkey, Pakistan, Ambassador of Pakistan in Turkey, Excellencies, parliamentarians, very prominent business personalities, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It is always a great pleasure to be here in Istanbul, a wonderful city and majestic Bosphorus, you can see from here, which connects
Asia with Europe and Turkey, one of Pakistan's staunchest ally around the globe. This fraternal bond between our two countries, which goes back to centuries, in fact, much before Pakistan came to being in 1947. This wonderful, unique relationship dates back to Turkey's War of Independence, in fact, when Muslims of the subcontinent, under the leadership of Ali brothers, they supported Turkey's great sacrifices. We are not strangers. Turkey, Pakistan, ek aur desh. We are friends. We are like a family. And I want to assure you that I would want to work with President Tayyip Erdogan, a very visionary leader, and I have highest of respect for him to further strengthen our relations in time to come under his very able leadership. Before I conclude, ladies and gentlemen, I would like to make this submission for your very kind consideration. And that is that today we have spent almost 3 hours over here and had various presentations, speeches. Let us resolve today, before we leave this hall to meet again, that these comments, presentations, words, speeches will be converted into action, and converted into action at lightning speed, so that we are able to achieve not only solid results, but tell the world that this friendship, which is based on the pillars of mutual trust, respect and dignity, is now being transformed into a kind of economic cooperation, economic transformation that the world has not observed thus far. If we are ready to accept this challenge, then I can assure you nothing will impede our way. Not this Bosphorus or mountains or the largest sea in the world, because synergy out of commitment is such a powerful action that nothing stops. On the way, whatever difficulties are there, you cross them over and rise to the zenith of glory through untiring efforts, hard work, sacrifice, blood and sweat. This is what our religion has taught us. This is what we have to adopt today. This is what we are here for. Inshallah, this friendship, this partnership will flourish in time to come through our team efforts. And I want to assure you that as Prime Minister of Pakistan, I will be not only your Chief Executive Officer, but I will roll red carpet for you, and all those impediments and delays will be removed. And my Turkish investor would be my master. Thank you very much. Pakistan Turkish.
Ladies and gentlemen, this concludes the plenary session of the Pakistan for their presence and valuable contributions. Thank you all. Have a good day. Excuse me, please. हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान एंड तुर्की इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जो इस तकरीब में शामिल थे। आइए जानते हैं उनकी नज़र में वज़ीर-ए-आज़म के इतने आला सतह वफ़द के साथ इस दौरे की क्या अहमियत है। जी आदिल साहब, क्या कहेंगे इस तकरीब के हवाले से और इस अहमियत के हामिल दौरे के हवाले से? देखिए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट फ्रॉम अ वाइल। ये होना चाहिए था। अगर मैं अपनी बात करूं, 11 साल से मैं यहाँ पे तुर्की में बेस्ड हूँ, मैनेजिंग पाकिस्तान तुर्की इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट काउंसिल। बट मसला ये है कि इस तरह के इवेंट्स होते नहीं हैं। हम अपनी कैपेसिटी में तो कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी को डिफरेंट कल्चर को लेकर आते हैं। बट अगर मेरा पीएम, ठीक है, आए इवेंट में, मेरे एम्बेसडर्स आए, मेरे वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स आए, तो वो इवेंट को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता है, वो हमने खुद आज देख लिया। तो इसी तरह ही अगर ये साल में देखें, वी टॉक अबाउट पाकिस्तान तुर्की कारदश मुल्क, तो हम कारदश, मगर वो प्रैक्टिकलिटी में कहीं नज़र नहीं आता। एक लगता है कि एक सौतेला भाई है, ठीक है, एक सगा भाई है, लफ्ज़ों में है। हाँ, लफ्ज़ों में है। सो हम अगर इस तरह की चीज़ें करें कि मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा प्रेसिडेंट, मेरे मिनिस्टर्स यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके मेरे लोगों से, हमारे लोगों से मुलाकात करें, तो वो जो हमारा 1-to-1 रिलेशन है ना, वो गैप ख़त्म होगा। जब गैप ख़त्म होगा तो हम खुद ही कुछ ना कुछ मैजिक कर सकते हैं आपस में। डिफरेंट मिनिस्टर्स ने अपने अपने शोबों के हवाले से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस पर एम्फसाइज़ किया और इस ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की बात की। हमारा और तुर्की का, पाकिस्तान और तुर्की का जो ट्रेड हजम है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है अगर हम तनासब देखें दूसरे मुल्कों से। तो इस किस्म के दौरे, इस किस्म के MOUs मुआहदे कितने मौसर साबित होंगे? देखिए, अगर हम बात करें ना ट्रेड का, तो इट्स 1.3 to 1.4 बिलियन डॉलर सालाना। पीनट वो इस तरह से है कि अगर आप इस्तांबुल का छोटा सा भी कोई एरिया उठा लेना तो वो उससे ज़्यादा जनरेट कर रहा है। आपके लिए पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी 400-450 बिलियन डॉलर है, इस्तांबुल से ज़्यादा बना रहा है। आपका GDP एक तरफ है और इस्तांबुल एक तरफ है। आप फ़र्क देखें, तुर्की +5 +6 के साथ ग्रोथ किया है और 1.7-1.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी चला गया है। और फिर आपके लिए एक वियर्ड सी बात होगी, लोग बिलियन 2 बिलियन डॉलर की तो बाल लगवा लेते हैं तुर्की में। यस, और 2 ब्रदरली मुल्कों को, कारदश मुल्कों का 1 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। इट्स अ शेम फॉर अस। सो अगर यही ट्रेड हम बात कर रहे हैं, जिस तरह हमारे मिनिस्टर्स ने बात किया, मिनरल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम है, हम खुद उसको मैनेज कर रहे हैं। IT के ऊपर, फ्यूचर इज़ द IT, ठीक है। बाद में हम बात करते हैं पेट्रोलियम के ऊपर। यही 3 चीज़ें जो आपको मुल्क को सस्टेनेबल बनाती हैं। साथ में आप एग्रीकल्चर लें, लाइफ स्टॉक लें और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट लें, आपका पूरा मुल्क सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। पाकिस्तान तुर्की खुद सेल्फ सस्टेनेबल हुए तो हमें तीसरे मुल्क की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन है या मुस्तकबिल करीब में ऐसा होते नहीं देख रहे आप? 100% मुमकिन। अब देखिए, मैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ माई काउंसिल, मेरी एक पावर लिमिटेड है, मगर जो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, ये मेरा फील्ड मार्शल है, उसकी तो पावर अनलिमिटेड है ना। उन्होंने तो एक कॉल करनी, यार ये ऐसे कर दो, ये हमारा जो इंटरनेशनल एयर कैरियर है PIE या तुर्की का जो है, इसको MOUs आपस में साइन करो, लेके जाओ, चीज़ें सस्ते दामों में लेके जाओ, फ्री में लेके जाओ। रीज़न, यार मैं अपने भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ, उस वक्त मेरी ज़रूरत है।
तो उनकी एक कॉल के ऊपर मेरी 10 साल की मिनट जो है कवर हो सकती है। सो एक कॉल हमारा प्राइम मिनिस्टर मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर करे, आपस में MOUs करे, उधर का भी मेरा प्राइम मिनिस्टर है, इधर का भी मेरा प्रेसिडेंट है, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे शहबाज शरीफ हैं तो यहाँ पे तैयब एर्दोआन है, तो आपस में अगर प्रॉपर MOUs किए जाएँ तो व्हाई नॉट, आई बिलीव वी कैन सी मिरेकल्स इन कमिंग डेज। Inshallah. Thank you very much talking with us. Thank you. We have a Turkish businessman with us who attended this event. Let's see what he says about today's event. Thank you very much, sir. What you will say about the visit of Prime Minister of Pakistan and this ceremony? First of all, I would like to show my sincerely congratulations to you. That was an amazing organization. As you know, Pakistan and Turkey are brother countries. And His Excellency Prime Minister Shahbaz Sharif came to Istanbul, and we are very happy to host him in this amazing city with his very honorable contribution to our business conference. As you know, the EEC, Foreign Economic Relations Board of Ministry of Trade of Turkey, prepared themselves to this event very seriously and very efficiently. And we met with many leading Pakistani business people and companies, and we talked about our possible partnerships and collaborations for the future. Right now, as a young business people, I visited before Pakistan, Islamabad. I saw many huge opportunities there. Inshallah, I hope we would like to develop our bilateral economic and investment relations with the support of this type of business conferences, and your contribution is important for also media. If media shows this type of conferences, interviews, that contributes to possible the other business people who would like to think to invest and making business with Turkey. Pakistan has very comparatively advantageous areas in the business. For example, very good population, very huge population, more than 200 million people lives in Pakistan. And in the last 10 years, we observed that internet penetration of the Pakistan is increasing. And this is very good sign to developing technological developments. For example, e-commerce, for example, financial technologies, for example, software as a service companies. There will be a huge opportunities to scale up these companies at global stage with the cooperation with Turkey. Because in Istanbul, as you know, we are bridging the Africa, Asia and Europe continents. And if any Pakistani business people or firm would like to establish their company here, they can reach many different markets with Turkey area. Inshallah, and also as Turkish companies can enter Pakistani market and make an investment there, and they can reach Central Asia and also Southeast Asia and also even Gulf countries. They can establish their companies, support offices, R&D centers in Pakistan to support their activities in this geography, Southeast Asia, Gulf countries and also Central Asia. This is, I think, key indicators of our business and investment cooperations. Pakistan, Türkiye, birlikte çok yaşa. जी तो व्यूअर्स वेलकम बैक। आपने तकरीब देख ली। पहली बार FBIZ TV इस किस्म की कोई सरकारी सतह की तकरीब कवर कर रहा था और पूरी तकरीब कवर की कोशिश की हमने प्राइम मिनिस्टर से या वज़ीरों से बात करने की, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था। लेकिन आप लोगों ने सारी तकरीब देख ही ली। पाकिस्तान तुर्की के दोस्ती के हवाले से, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तैयब एर्दोआन जोन के हवाले से, बिज़नेस जोन के हवाले से और हर तरह के लिहाज से बातचीत हुई। 3 घंटे तवील ये तकरीब थी जिसमें मुख्तलिफ शोबों के मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस भी पेश की। वो सारी आपने अहवाल देखा ही। तो
क्या था वो आप लोग खुद देख लीजिए, हमने तो कवर करना होते हैं इवेंट, वो हमने कर दिया। इस पर कमेंट्स बुरे बुरे ना कीजिएगा, मुझे पता है बहुत बुरे कमेंट्स आ सकते हैं इस व्लॉग पे, लेकिन बुरे बुरे कमेंट्स ना कीजिएगा। हमारी ड्यूटी है किसी भी इवेंट को कवर करना, वो हम करते हैं। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कैसे देखते हैं आप लोग इस इवेंट को, ठीक है जी। बहरहाल दो मुल्कों के दरमियान सरकारी सतह पे ये एक इवेंट था जिसको हमने कवर किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा ना लगे तो फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो बता दीजिएगा। तो अब थक चुका हूँ बिल्कुल, अकेला सब कुछ हैंडल करते करते। आपसे चाहते हैं इजाज़त, मुलाकात होगी फिर किसी इवेंट में किसी और जगह से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।